आई वुडंट बी। और मुझे भूख लगी है अगर आप छोटे से और मुझे रोना नहीं है स्टेज पे, अच्छा दिन है तो अवॉइड कर। श्रीदेवी जी से आपको कंपेयर किया। जानवी को देखते हैं तो श्रीदेवी जी की याद आ ही जाती है डेफिनेटली, यू नो। व्हाट डू यू फील? मुझे देख के नहीं याद आती। नहीं, आपको तो हाँ, सिर्फ जानवी को देख के याद आती है, आपको तो है, लेकिन यू नो माई बेबी हैज जस्ट स्टार्टेड अ जर्नी, सो डोंट पुट हर इनटू एनी काइंड ऑफ अ कंपैरिजन विद एनी ऑफ दी। आज श्रीदेवी जी का काफी बार जिक्र हुआ। मुझे आपके जब भी जिक्र हो रहा था आपके आंख में देख के थोड़ा इमोशनल आप लग रहे थे। बट बायोपिक की मैं बात करूं, यू आर डूइंग अ बायोपिक, आई नो दैट इन फ्यूचर, बट श्रीदेवी जी की कभी भी बायोपिक आती है इन फ्यूचर, सो आर यू ओके टू डू दैट? नो, आई वुडंट बी। क्यों? सर अभी वो बहुत लंबा आंसर है और मुझे भूख लगी है अगर आप छोटे से और मुझे रोना नहीं है स्टेज पे, अच्छा दिन है तो अवॉइड करता है। भी जी मेरा सवाल आपसे ये है, अभी दो सीमा ने भी ये पूछा और सोहेल जी ने भी ये पूछा, श्रीदेवी जी से आपको कंपेयर किया, लेकिन श्रीदेवी जी भी स्टार रहते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स में बहुत काम किया, जैसे सदमा ही ले लें, मॉम जो उनकी लास्ट फिल्म थी वो भी ले लें। तो आपने भी स्टार होते हुए एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स को जिस तरीके से चैलेंजिंग रोल्स को लेना है, ये डेलिबरेटली था या फिर ऐसी कोइंसिडेंटली आपको मिलते गए? मैम आई थिंक जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए थ्रिल और एक्साइटमेंट इसी चीज़ में है कि मैं अलग अलग टाइप के फिल्म्स करूं, अलग अलग किरदारों को निभाने की कोशिश करूं और उनके ज़रिए आई कैन लिव डिफरेंट लाइव्स एंड लर्न न्यू थिंग्स एंड ग्रो। एंड देखिए, स्टार वार बनना बहुत अच्छा है और उसमें मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन मुझे एक्टर बनना है और हमेशा से बचपन से यही ख्वाहिश रही है कि मैं एक्टर बनूं। और आई थिंक एक्टर बनने के लिए किरदारों को ईमानदारी से और सच्चाई से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। हम जानवी को देखते हैं तो श्रीदेवी जी की याद आ ही जाती है डेफिनेटली, यू नो। व्हाट डू यू फील? मुझे देख के नहीं याद आती। नहीं, आपको तो हाँ, सिर्फ जानवी को देख के याद आती है, आपको तो है, लेकिन यू नो हम जानवी में वो श्रीदेवी जी को ही देखते हैं इनफैक्ट, लेकिन उतना पोटेंशियल उनमें है। व्हाट हैव यू टू से ऑन दैट थिंग? You asking me? या सर। Well, you see, everybody has a different mechanism to understand a character and to, perform accordingly. I wouldn't say perform, to become the part. That was one of the major USP of Sri, and that is another. I mean, this is the same thing because perhaps she carries the same DNA. She also picks up the character, or rather, gets into the character and doesn't play the part, becomes the part. And which is why you've seen the growth in the films that she's done so far. Yeah. Janhvi, what have you to say? Like, how much you feel yourself, you're seeing your mom, उनकी फिल्में आपने देखी होगी. Definitely, we have seen you, like, and she had been so caring about you all, like, the way she used to nurture you all. हमने बहुत देखा है, आपको. I'll just interrupt. Incidentally, you see, the audience in North India saw Sri after she had done almost 150 to 200 films in South. Yeah. So she had reached a particular level of, understanding what characters are and how each beat has got to be captured or, understood. So she came here after doing 200 films in the South. My baby has just started a journey. So don't put her into any kind of a comparison with any of the, work of her mother. As I told you, she also had a journey which was brilliant. She started as a child star, but most of the North Indians saw her after she had done more than 200 films. But she has reached actually, मतलब हम तो बहुत ही मतलब देख रहे हैं उनमें एक्चुअली, मुझे लगा. अच्छा, मुझे पूछना कि कभी ऐसे लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन आई है जैसे ये, कैसी लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन था? इट कुड बी एनीथिंग ऑन द सेट, कुड बी एनीथिंग वेयर यू रिमेंबर, it was a very difficult thing. If you would like to share anything on it. एक्चुअली ये शूट के दौरान जब हम फ्रीज़र का पोर्शन शूट कर रहे थे, मैं बहुत ही बीमार पड़ गई थी और काफ़ी दिनों के लिए एक्चुअली मुझे ऐसे लगता था कि मैं होश में नहीं हूँ क्योंकि मैं इतने मेडिसिन ले रही थी एंड we had already gone overboard because the freezer shoot was so tough on so many people, and I just remember that last stretch being very
very mentally and physically exhausting because the way we started playing it, and Matu sir, you can chip in if you have anything to say also, we would start running really long takes. तो हमने पहले जैसे इमेजिन किया था कि 5 मिनट का सीन करके बाहर आके 1 मिनट का ब्रेक लेके वापस करने जाएंगे, बट देन वी एंडेड अप रनिंग 15 मिनट लॉन्ग टेक्स where I'd go through the entire action, and there was a lot of crying, breaking, screaming, and it was a lot. जानवी मेरा let me also add this. You see, while they were shooting the freezer portion, I mean, there were quite a few people who fell ill, recovered, and all that. But Janhvi fell ill, recovered. The director, Mathukutti Xavier, Mathukutti Xavier, okay. He fell ill, he had just recovered from COVID. So the immunity was not that strong, which is the reason he got affected by the cold, the freezer shoot. And I think almost for 4 or 5 days a week, 6 days, he was, bedridden in the hotel. And then the doctor told him, you're not to enter the freezer. And since the doctor knows the film world, he said, you can see the monitor from outside. So he said, yes, I'll do that, Yeah. I'll do that. And he stayed outside for precisely 10 minutes of the first day, and then he was inside the freezer. With a muffler, monkey cap, all those things. He never got out of it. And then again, you fell ill for the second time also, yes. So this is what his, creativity or the kind of person he is, the kind of director he is. He didn't want any loose ends, anything to be missed out. And he had to be there to give instructions even when the camera was on. When you see the film, you'll realize, there are so many delicate movements, so many intricate movements. She falls, there are too many things which required detailing. And he felt that detailing cannot be explained or pointed out if he's sitting on the monitor. So he had to be in there where the action happens. And so he fell sick again. And I was lucky that it didn't happen the third time. जानवी